ओके, स्टार्ट करें। Yes, sir, start कर सकते हो. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be covering the polyps and the tumors of the intestines. Now, polyps by definition are uh, a growth on the surface of the mucosa of the bowel wall, and they are termed as sessile when they grow without a stalk and pedunculated when they have a stalk. सही है, तो यानी कि अगर ब्रॉड बेस होगा तो it will call them as sessile polyps, and if it has a narrow stalk and then it mushrooms out, it is called a pedunculated polyp. These are descriptive terms, कोई इसकी ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है सिवाय इसके कि ब्रॉड बेस ग्रोथ्स होती हैं तो वो उनको रिसेक्ट करना मुश्किल होता है। पेडुंकुलेटेड पॉलिप्स की रिसेक्शन आसान होती है। Broadly, the polyps of the bowel are classified as neoplastic and non-neoplastic. Now, about the non-neoplastic polyps, the most common of the non-neoplastic polyps are hypoplastic polyps. They are usually discovered in the 6 to 7 decades of life, so old age individuals में होता है, and thought to result from decreased epithelial turnover and delayed shedding of epithelial cells. Fortunately enough, they don't have any malignant potential. However, you need to distinguish them from sessile-threaded adenomas, which have predisposition to develop into full-blown malignancies. So that is why if you have a polyp in the large bowel, you need to biopsy it. Epithelial hyplasia can also occur as a non-specific of the colon, and usually they are small. They may be seen, they may be multiple in number, especially in the rectosigmoid. And what you see microscopically is because of the proliferation of the surface epithelial cells, you will see serrations or zigzag pattern at the surface. तो जो यहाँ ये है ये एरिया, जो यहाँ पे यानी कि सरफेस के पास का एरिया है, यहाँ पे आपको zigzag पैटर्न मिलेगा, सही है, बिकॉज द प्रोलिफरेशन इज टेकिंग प्लेस। जो बेस है क्रिप्स की वो स्पेयर हुई होंगी, जो प्रोलिफरेशन है वो सिर्फ सरफेस तक होती है, क्रिप्स की बेस तक नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि इन अनदर काइंड ऑफ पॉलिप the bases are involved and those polyps have predisposition to develop carcinomas. So hypoplastic polyps, the serrations or the proliferation is only at the surface, सही है, तो सिर्फ इस रीजन तक जो है प्रोलिफरेशन होती है, यानी कि अपर 1/3 या अपर 1/2 पर जो है वो प्रोलिफरेशन हो रही होती है, लोअर हाफ या लोअर 1/3 में प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होती इन हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, सही। दिस इज हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, आर शेप ल्यूमिन हो जाती है। Now, inflammatory polyps form as part of solitary rectal ulcer syndrome, and they are purely inflammatory lesions. And this basically takes place because there's chronic inflammation, a lot of cytokines are released, edema is there, growth factors are released, so there's proliferation of epithelial cells, and because of the edema and inflammation, the mucosa acquires a polypoidal configuration. There's a clinical triad of bleeding, rectal bleeding, mucous discharge, and inflammatory lesions of the anterior rectal wall. It is generally due to impaired relaxation of anorectal sphincter, leading to recurrent abrasion of the overlying mucosa. Inflammatory polyps may ultimately form as a result of chronic cycles of injury and healing. So, this is also labeled as solitary rectal ulcer syndrome. Initially, it presents as an ulcer. बार बार होता रहता है, म्यूकोसा प्रोलिफरेट करती रहती है until it acquires a polypoidal form, and then it is termed as an inflammatory polyp. So it's part of the solitary rectal ulcer syndrome. Typically exhibits mixed inflammatory infiltrate, erosion, and epithelial hyplasia together with lemnoprobia, fibromuscular hyperplasia. Hematomatous polyp.
Hematomatous polyps also are generally considered as non-neoplastic, but recent evidence has found out that they do have a genetic component to them, and there are some familial forms also, and some of them may harbor slightly increased risk for development into carcinomas, especially if they are form part of a syndrome. Sporadic का इतना risk नहीं होता, but syndromic hematomatous polyps definitely carry a risk for transformation to malignant tumors, and they are associated with development of tumors in other sides of the body. Uh, they were originally thought to be development abnormalities. Many hematomatous polyp syndromes harbor mutations in tumor suppressor or proto-oncogenes. Some may be considered as pre-malignant, and I will discuss them later on. Important to recognize because as they are of associated external manifestation and possibility that other family members may be affected. सही है? तो दूसरे organs के दूसरे sites पर tumors भी हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि syndromic form होती है, familial form होती है. तो अगर एक family में एक member को है, तो there are chances कि किसी दूसरे family member को ना हो. Juvenile polyps or these are examples of hematomatous polyps, and they are focal malformation of epithelium and the lamina propria. अच्छा, hematomatous polyps की important बात यही है कि it is not only the epithelial component that is abnormal, the stromal component and the lamina propria component and the muscularis mucosa component is also not normal. सही है? तो इसके तीनों constituents तभी hematomatous है कि सिर्फ epithelium नहीं है, जो connective tissue और supporting background stroma है, वो भी इसका constituent part होता है. Most occur in children younger than 5 years of age. Most are located in the rectum. Hence the name juvenile polyps. अगर ये adults में होते हैं तो इनको मैं नाम भूल गया, अभी आता है बताता हूँ. रिटेंशन पॉलिप्स कहते हैं, रिटेंशन पॉलिप्स कहते हैं. अगर ये एडल्ट्स में होते हैं तो दे आर कॉल्ड रिटेंशन पॉलिप्स. अगर टीन्स में होते हैं या बच्चों में होते हैं, दे आर कॉल्ड जुवेनाइल रेक्टल पॉलिप्स. Rarely intersection obstruction of polyp may occur because of the polyp. Solitary lesions can be referred to as retention polyps. Autosomal dominant syndrome of juvenile polyposis may have 3 to as many as 100 polyps. और ये important इसलिए क्योंकि फिर then other syndromic forms of polyposis syndromes may come into differential diagnosis. Some patients will also have gastric and small bowel polyps that can undergo malignant transformation. इसलिए these patients, especially the syndromic patients, need to be kept on surveillance. Pulmonary arteriovenous malformations and other congenital malformations are recognized complications or recognized extra-intestinal manifestations of juvenile polyposis. And this is how it is. Generally, what you will see is क्या चाहते हैं, जनरली क्या आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है ये अमूमन ये रिटेंशन पॉलिप्स की या जुवेनाइल पॉलिप्स की अल्सरेटेड होगी. ग्लैंड्स डायलेटेड होंगे, बड़े बड़े होंगे, और बीच में ये जो लैमिना प्रोप्रिया है दिस विल शो मार्क्ड इन्फ्लेमेशन. सही है? और ये देखो ये डायलेटेड ग्लैंड है, कितना बड़ा ग्लैंड है. ठीक है, डायलेटेड ग्लैंड है फिल्ड विद inflammatory cells and mucoid material, or surrounding stoma is also inflamed. सही है, सारा inflamed stoma है. Now, Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome is an autosomal dominant syndrome. Median age of presentation is 11 years, and the patients present with multiple GI hematomatous polyps and neutropenic hyperpigmentation. तो usually जो complaint होगी या पेशेंट आपके पास आएंगे तो वो एक तो ये बताएंगे कि मुंह में ये अजीब टिप्पे पड़ गए हैं, काले काले छोटे छोटे से, और लिप्स के अराउंड और विद इन द ओरल कैविटी. सेकंड जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी वो ये होगी अमूमन के वो ब्लीडिंग पीआर के साथ या एनीमिया के साथ प्रेजेंट है.
The mucocutaneous hyperpigmentation is characterized by dark blue to brown macules on the lips, nostrils, buccal mucosa, palmar surface of hands, genitalia, and perianal region. So they look like freckles, but the difference between freckles and these mucocutaneous hyperpigmentation is that freckles would involve the oral cavity or the mucosal surfaces. So, because they don't contain, these are not sites that naturally contain pigment. But in Peutz-Jeghers syndrome, you will have pigmentation of the mucosal cavities also. सही फ्रैकल्स जो हैं वो जनरली लिप्स को स्पेयर करते हैं उसके चिन पे अपर चेस्ट थोरेक्स वगैरह पे आर्म्स पे होंगे बट विद Peutz-Jeghers syndrome you will see these hyperpigmented spots on the lips and within the oral cavity also. And because they involve multiple areas of the gastrointestinal tract and they can occur in the small bowel also, so they may initiate intussusception. Associated with markedly increased risk of several malignancies, and the lifetime risk of developing a malignancy is 40%. So that's fairly high. Regular surveillance is recommended beginning at birth for sex cord tumors of the testes, in late childhood for gastric and small intestinal cancers, and second and third decades of life for colonic, pancreatic, breast, lung, ovarian, and uterine cancers. The patients have a germline heterozygous loss of function mutations in gene STK11 present in about half of the patients of familial Peutz-Jeghers syndrome. And STK11 is a tumor suppressor gene that encodes a kinase which regulates cell cycle. So if it is hampered, the cells they proliferate in a uncontrolled fashion. Roll number 24, you have a question? No? Okay. Okay. Characteristically, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा तवज्जो दे दो क्योंकि this will help you in differentiating hematomatous polyps or Peutz-Jeghers polyps from adenomatous polyps. Characteristic arborizing of connective tissue, smooth muscle, lamina propria and glands lined by normal appearing intestinal epithelium. Arborization मैं भी इसको explain कर देता हूँ. Arborization and presence of smooth muscle intermixed with lamina propria are helpful in distinguishing Peutz-Jeghers polyps from other juvenile polyps and adenomatous polyps. So, if you can appreciate in these images, ये मैं जो स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ तो दिखती है तुम लोगों को? सही है? तो देखो, the epithelium is proliferating, number of glands increase हुए हैं, but can you appreciate this? This is an integral part of the Peutz-Jeghers polyp. Yes, okay. तो ये Peutz-Jeghers polyp का ये इंटेग्रल पार्ट होता है जो मस्कुलरिस या जो मसल की विस्प हैं ये इसका कंपोनेंट है. If you don't see these wisps, you cannot diagnose a case of Peutz-Jeghers polyp. सही है? तो देख रहे हो कि ये abnormal glands हैं, ये abnormal glands हैं, ये सारे abnormal glands हैं, सही है? And then you can appreciate these muscle wisps. So it is an integral part. सही है? तो और अगर इसको यूं कर लें एक सेकंड में इसको तुम लोग को थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दो. माइंड बाय ड्राइंग स्किल्स. बट एडिनोमेटस पॉलिप्स में लेट्स से जो प्रोलिफरेशन है वो ग्लैंड्स की होगी. सही है? ये ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे. सही है? मसल जो है वो नीचे लैमिना प्रोप्रिया तक होगा जब तक कि इन्वेजन नहीं होगी. इन्वेजन होगा तो फिर वो ग्लैंड्स नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे. इट विल बी द ग्लैंड्स दैट विल बी गोइंग डाउन. सही है? इन इन्वेसिव कार्सिनोमा. एडिनोमेटस पॉलिप्स तक जो न्यूप्लास्टिक होते हैं, द ग्लैंड्स विल स्टे ओवर द मस्कुलरिस लेयर. In
Huge Jacobs polyp, these muscle layers या जो muscularis की wisps होती हैं ये ऊपर तक आती हैं and they form part of the polyp. सही है, तो ये muscle जो है it will be present in the lamina propria of the polyp. सही है, तो ये important फर्क है. सही है, तो they will generally form जैसे एक दरख्त का तना होता है ना, कि वो दरख्त के जो supporting branches होती हैं they go up to the leaves. तो ये इसमें भी जो है वो जो मसल की लेयर्स हैं वो दे विल गो राइट अप टू द एंड ऑफ द epithelial surfaces. Okay. Now coming to neoplastic polyps. अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि मसल इज अ सर दीस टू जगह polyps, how do they initiate dark blue macular? बेटा it's part of the syndromic form. जो they exactly I'm not sure, but I think they cause abnormal कहते हैं ना deposition of melanin from the melanocytes. सही है, but I'll मैं इसको कंफर्म अभी सेकंड लेक्चर में कंफर्म कर दूंगा एग्जैक्टली कि how this brown blue macular form in root Jacobs polyp. सही है, मैं इसका सेकंड हाफ वाला लेक्चर मैं तुम लोगों को सुना दूंगा. But I think it has something to do with abnormal melanocyte transmigration. But I'll confirm it. सही है. अच्छा, neoplastic polyps. Most common neoplastic polyps are colonic adenomas. They are precursor to most colorectal adenocarcinomas. So this is why they are so important. Because two reasons. एक तो ये pre-malignant है और दूसरा ये कि adenomatous polyp की स्टेज तक अगर आप रिमूव कर देंगे तो you will eliminate the patient from having a risk for development of adenocarcinoma. सही है? So the patient may not have to undergo extensive surgery. तो ये important है. But this is true for sporadic adenomas. Familial में तो इतने होते हैं कि there's no choice but you have to do a colectomy. Adenomas range from small, often pedunculated polyps to large sessile lesions. There is a slight male predominance. Patients at increased risk, including those with a family history of colorectal adenocarcinomas, are typically screened colonoscopically at least 10 years before the youngest age at which our relative was diagnosed. So generally, in patients की जो screening वो late 20s, early 30s में start हो जाती है generally. But the rule is कि let's say कि किसी family member को 40 years पे हुआ था, so you will start the screening at 30 years. अगर किसी को 30 years पे हुआ था, you will start the screening at 20 years. But generally ये round about जो familial forms है वो late 30s represent करते हैं, तो you generally start screening at late 20s or early 20s. Preferred approach to surveillance varies, but colonoscopy is the most common and perhaps the best technique, because colonoscopy का advantage ये कि you can always take a biopsy. Capsule endoscopies भी होती हैं. First of all, they are very expensive. हर जगह होती नहीं है. And then obviously जब तक आप biopsy नहीं करेंगे आप exact nature ascertain नहीं कर पाते कि ये polyp का nature क्या है. Colonoscopy is the best. Colorectal adenomas are characterized by presence of epithelial dysplasia, and dysplasia means disorganized growth, both cytological and architectural. Majority of the adenomas, fortunately enough, do not progress to adenocarcinomas, but nonetheless, because they are precursor lesions, so at least all sporadic adenomas should be removed. और रही है अगर familial form है तो ultimately आपको कोलेक्टमी करनी पड़ जाती है, खासतौर से अगर फैब का पेशेंट है. Most adenomas are clinically silent, with exception of large polyps that produce occult bleeding and anemia. And generally, एक general rule बता रहा हूँ कि अगर polyp anemia के साथ present कर रहा है तो और 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो generally that is bad news. इसका मतलब है कि chances are very high likelihood that there is associated invasive adenocarcinoma in the polyp. Adenomas can be classified as tubular, tubular or villous based on their architecture.
ये सिर्फ आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, इनकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है. Generally, tumor polyps greater than 2 centimeters have a very high chance of harboring invasive adenocarcinoma in them. सही है. So more important than tubulous or tubulovillous or villous adenoma is how big the polyp is, and obviously presence of high grade dysplasia or low grade dysplasia or associated invasive adenocarcinoma. Another kind of polyp that is seen uh, uh, are sessile shaded adenomas. इनको आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवेज हैं कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के. तो ये अमूमन ये जो सेसाइल स्टेटेड या सेक्साइल एडिनोमास हैं, स्टेटेड एडिनोमास हैं, ये दूसरे पाथवे से अराइज करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आगे आके बताता हूँ. सेसाइल स्टेटेड एडिनोमास लुक मोर लाइक हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स, और इम्पोर्टेंट चीज ये कि इनमें टिपिकल डिस्प्लेजिया नहीं होता जो दैट वी सी इन adenomatous polyps, and they are more commonly found in the right colon. Despite malignant potential, sessile shaded adenomas lack typical cytologic features of dysplasia. Unlike hyperplastic polyps, which are more common on the left side, sessile shaded adenomas are more common on the right side. Histologic criteria for these lesions include shaded architecture throughout full length of glands, including crimp base. तो इसमें अगर देखो तो नॉर्मल ग्लैंड से इसकी ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत स्लाइट फर्क होता है. हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स का अगर तुम लोगों को याद हो, उसकी जो प्रोलिफरेशन थी या उसकी जिगजैग अपीयरेंस थी या सॉटक अपीयरेंस थी, वो सरफेस तक थी. इसमें देखो ये जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जो प्रोलिफरेशन जोन्स हैं वो नीचे तक आ रहे हैं. लाइकवाइज इस वाले नेक्स्ट इमेज में ज्यादा क्लियर है. देखो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स में जो सेरेशंस हैं वो ऊपर तक रहेंगी. थ्रेडेड एडिनोमास में ये प्रोलिफरेशन जो है वो नीचे तक रहेगी, तभी इनको कहते हैं कि इन्वर्टेड, ये टी शेप हो जाती हैं. सही है. यूजली जो क्रिप्ट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसी होती है. इसमें क्या होती है कि एक तो प्रोलिफरेट करती है और ये नीचे आके ब्रॉड हो जाती है. तो ये ना बूट शेप या टी शेप या एल शेप इस तरह की हो जाती है बिकॉज द epithelial cells they proliferate in the base and proliferate horizontally. अल्टीमेटली फिर इन्हीं में से जो है वो न्यू कार्सिनोमेटस फोकाई डेवलप होते हैं. सही है. तो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप में प्रोलिफरेशन इज एट द टॉप, सेरेटेड एडिनोमास में द प्रोलिफरेशन इज एट द बेसल जोन. Okay. And as I told you before, small proportion of colorectal adenomas में harbor invasive carcinoma detection. And इसमें से सबसे बड़ा risk factor होता है वो ये होता है कि पॉलिप का साइज कितना बड़ा है. Those that are more than 2 centimeter harbor increased chances of development or presence of invasive carcinoma in them. Adenomatous polyposis. Familial adenomatous polyposis is an autosomal dominant disorder in which patients develop numerous colorectal adenomas as teenagers. They are caused by mutation in adenomatous polyposis coli gene or APC gene. About 75% of the cases of adenomatous polyposis are inherited causes. The rest appear to be de novo mutations. And for the diagnosis of classic FAP or familial adenomatous polyposis, you need to have 100 polyps at time of diagnosis. And that is the reason कि कोलेक्टमी पॉसिबल नहीं हो, पॉलीपेक्टमी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि आप कितने पॉलिप्स निकालते रहेंगे और ये दोबारा होते रहते हैं. तो इसीलिए once you have diagnosed a case of FAP, the best choice or best treatment is prophylactic colectomy. You remove the whole colon. So that decreases the development of risk for at least the adenocarcinoma of the large bowel, because they will develop adenocarcinoma if you leave them alone. By age of 50, though, almost 100% of cases will develop adenocarcinoma.
Prophylactic colectomy is therefore the standard of therapy. Patients remain at risk for neoplasia at other sites, and patients with FAP have a variety of extraintestinal manifestations, including congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium. And ये एक advantage होता है कि you can diagnose or catch these patients at birth. Okay, this can be caught through retinoscopy at birth. सही है? तो अगर आप उस वक्त family history of colorectal adenocarcinoma की and you see these patients, so you may catch these patients at birth and start screening early on before the patient develops adenocarcinoma or symptoms for polyposis. Now there are certain variations to the classic FAP gene mutations, and those have slightly different clinical features and are at risk for other extraintestinal tumors. And those syndromes are called Gardner syndrome and Turcot syndrome. Some polyposis patients have APC loss. They exhibit biallelic mutations of base excision of repair gene MYH. I'll stop over here. बाकी चीजें फिर हम next lecture में cover करेंगे. If you have any questions up till now, please feel free to ask me. Any questions? देखिए, arborization again. देखो बेटा उसमें होता ही है कि